Good morning, everyone. First, we will start with the technical and derivative update. Yesterday, what we saw, Nifty almost closed on a flattish note, like around 42 points. If we saw on the broader market, mid cap and 50 and mid cap 100 indices, small cap indices close in the red. On the sectorial front, if we saw, then Nifty IT witnessed a buying momentum and financial services close in the green, and rest of the other indices close in the red. On the daily chart, if we see, selling pressure was visible in the first of the trading session, and in the second half of the session, recovery was witnessed, and almost Nifty registered a positive close. On the daily chart, index formed a long shadow at a lower levels and close around the day's high levels. So now the trend of the index, Nifty index, is continuation that next resistance levels at 17,500 and 17,800 levels. On the lower side, support at 17,200 levels. On the bank Nifty front, yesterday bank Nifty remained a range within a previous day candle and close almost on the slightly flattish note, minus 0.09 percentage. Bank Nifty is trading above the trendline breakout level, which is a 37,500 levels, and above that, Bank Nifty is now trading and consolidating. So support for the Bank Nifty is now 37,500 levels. If Bank Nifty break 37,000 levels, then loss of momentum can be there, and further correction can be we can see. So now on the derivative front, yesterday Nifty future OI saw a short covering of around 4%. So overall reduction of 0.47 million shares. Total outstanding position currently at 11.54 million shares. Advanced decline ratio was a negative. 61 stocks on the gaining side against 136 stock on the losing side. TCR OI saw a downtick, which closed at 1.28 as we compared to previous closing around like 1.38. So yesterday major addition happened in the put option front at 17,300 and 17,400 strike. Saw addition of more than 2.32 and 1.61 million shares each. While on the call option front, 17,400 and 17,600 strikes saw addition more than 0.77 and 1.84 million shares each. So long addition was witnessed in yesterday Nam India, Eicher Motor, GNFC, and short position were witnessed in Indus Tower, Alkem, Chambalford, and Syngin. Now on the call option front, on the derivative side, one can buy persistent future in the range of 3710 to 3730, stop loss 3630, and target upside 4%. On the technical option front, one can buy Reliance future in the range of 2585 to 2605. Stop loss is 2544 and target is 2695. That's it from my end. Now I will hand over to Archana ma'am for further research update. Thank you. Thank you, Kshitija. Good morning, team. So, a few updates from my side, starting with Birlasoft. So, the company reported subdued Q1 FY23 revenues, wherein the growth was just 1.5% QOQ, mainly due to the delay in the deal signing and challenges at the client's end. Going forward, the company is expecting the stuck deals of close to $15 to $20 million to fructify and bolster growth. Hence, the company aspires to surpass FY22 revenue growth of 16% YoY in FY23. However, we believe that this is an uphill task and we expect the company to register 12% YoY growth in FY23. In addition, we have lowered our margin expectation for FY23 based on Q1 FY23 performance. So currently we have buy rating on the stock with a target price of 396. Coming to Inox, the company reported a good set of numbers. Revenue came in at 582 crore, which is growth of 83% QOQ. EBITDA profit stood at 123 crore from loss of 106 crore on QOQ basis, while net profit was at 73 crores. So, the numbers are pretty good, but we believe that the valuation is slightly stretched. So we currently we have hold rating on the stock with a target price of 665. Earlier we had buy rating on the stock. On Godrej Consumer Products, the company's net sales came in at
3,125 crores, growth of 8% YOY, while EBITDA came in at 520 crores, down by almost 13% over Q1 FY22. The company's net profit EBITDA margin also declined by 400 odd bips to 16.7%, while adjusted PAT came in at 347 crore, down by 17% YOY. We have buy rating on the stock with a target price of 1017. On Vodafone Idea, the company reported their Q1 numbers. So revenue grew by 1.6% QOQ to 10,400 crores. The telecom operator has posted loss of 7,300 crores for the quarter ended June 2022 against loss of 6,500 crore in the previous quarter, following an increase in interest and finance cost. EBITDA fell by 7% QOQ to 4,300 crores and margin declined by 380 basis points QOQ to 41.6% in the quarter. On Interglobe Aviation, the revenue grew by 327% YOY to 12,800 crores. The aviation company posted net loss of 1,064 crores in the Q1 FY23, which narrowed from loss of 3,170 crore in the same quarter last year. EBITDA came in at 716 crore with EBITDA margin of 5.6%, which improved significantly compared to the negative EBITDA of 1,360 crore in the same quarter last year. On GMC project, the company reported consolidated profit at 31 crore for the quarter ended June 2022 against loss of 10 crore in the same quarter last year. The revenue during the same period increased by 44% to 1,670 crore, partly on a low base of last year same quarter, which was affected by the second wave of COVID. On Satin Credit Care Network, the company reported profit at 60 crore for the quarter against loss of 71 crore in the same quarter last year. Net interest income increased more than threefold to 512 crore in the quarter, but asset under management has declined by 0.8% to 6,390 crore. On Gulf Oil and Lubricants India, the revenue grew by 10% to 706 crore. The company reported 13% QOQ decline in consolidated profit at 55 crore for the quarter ended June 2022. Now, this was impacted by the weak operating performance and the lower other income. On Karnataka Bank, the bank has entered into an arrangement with UB for co-lending via UB Co-Lend, India's co-lending platform. This collaboration will allow the bank to digitally onboard various NBFCs to lend significant amount of money and onboard a larger customer base as a result of their better consumer outreach. So that comes as a positive development on the Karnataka Bank's front. On Redington India, the company's net profit jumped by 36% YOY to 326 crore, while the revenue grew by 25% to 16,800 crores. On Adani Wilmar, the revenue grew by 30% YOY to 14,730 crores. The company recorded 10% YOY growth in consolidated profit at 194 crore for Q1 FY23. Now, this was on account of your strong growth in top line, while EBITDA increased by 14% YOY to 496 crore. So that's it from my side. Now I hand it over to Prabhakar sir for his research updates. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Archana. Good morning, team. Very important is crude oil is now trading below $100. After a very long time, I'm seeing crude trading below $100 a barrel. It is this is the first time in 30 years I have seen crude sustaining above $100 for a very long time. But if crude comes down, it is going to be positive because our GST collection, raw material prices coming down, many things have happened. Only crude has been a thorn, and globally, Maersk, a shipping company, major shipping company, has said the demand is not there. Shipping rates are likely to come down, is what they have warned. That means global trade is coming down, but our imports are still at elevated level due to high crude imports, high gold imports, and electronic imports. But crude coming down could be something positive trigger. And RBI policy meet is happening. Maybe very soon they will announce the rate hike.
but I expect a moderated rate hike, 35 basis point, something around that. But let us see. Novelis has come with a very good result. Novelis is a Hindalco US subsidiary. They came with a very good results. Sales was up by 32% at $5.1 billion, and EBITDA per ton also was very high, even on quarter basis and year on year basis at $583 per ton. So Hindalco will be a stock to watch. PI Industries, they reported good set of numbers. The revenue was higher by 29% at 1,543 crores, and profit after tax 262 crores, higher by 40%. EPS 17.3 rupees. Chambal Fertilizer also came with results. Yeah, their revenue was almost double at 7,291 crores, but profit after tax was down by 10% at 341 crores. Their debt stands at 3,729 crores. We need to understand, agrochemical or fertilizer, urea, the prices have gone up, and that is where the impact is there. So we need to watch out, the due to global demand or scarcity in supply. Now I think fertilizer stock will have a temporary blip, but over a period of time this will get readjusted. Devyani came with results, wonderful results from Devyani. Their revenue was higher by 100% at 704 crores. Profit after tax of 74.8 crores. EBITDA margin at 23.3%. Company has opened almost 70 net new stores, and the total store stands at 1,008. No, Devyani has KFC, Pizza Hut, Costa Coffee, and a South Indian restaurant called Wango. No, and KFC they have 425 units, and Pizza Hut 165 units. And I was checking now, AMC companies are now starting to rally. So NAM India and UTI AMC will be two stocks to watch, and if these two rally, then SDFC AMC also might follow. AB Capital came with results. The revenue was higher by 26% at 5,859 crores. Profit after tax 42.2% at 429 crores. And they have almost 3.9 crore customers. And NBFC AUM also increased by 22% at 69,887 crores. AB Capital is a holding company of most of the Aditya Birla financial thing. Let it be AB Life Insurance or Aditya Birla Mutual Fund, everything this company holds. So holding company, it has a major discount in that. In one more news, CCI, Tata Coffee came with the results. Results were very good. Revenue was higher by 24% at 666 crores. Profit after tax higher by 42% at 65 crores. Triveni Engineering, they came with the results. Revenue was higher by 22% at 1,361 crores, but profit after tax was down 33% at 58 crores. But we need to understand, even government has announced sugar prices will be increased. Sugar cane prices will be increased. That will be slightly negative for sugar company. So there can be some reaction in sugar company today. But their ethanol project, they are again expanding. So 450 crores they'll be spending. So that is something we need to watch out for. Now with that, over to you. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. So हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. So हम स्टार्टिंग में देखेंगे रिजल्ट्स ऑफ बिरला सॉफ्ट के कल नतीजे देखेंगे. नतीजे देखेंगे तो सबड्यूड थे. रेवेन्यू सिर्फ 1.5% ग्रो हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर. ये रीजन था इसका डील साइनिंग और जो चैलेंजेस क्लाइंट्स इनकी वजह से. और कंपनी को लगता है कि जो डील्स है वो स्टक है 15 से 20 मिलियन के आसपास में, जो आगे ग्रोथ हो सकती है. और कंपनी एस्पायर करती है वो FY22 में रेवेन्यू को ग्रोथ 16% से बढ़ाएगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. और उन्होंने इसके चलते हमने हमारे मार्जिन्स को थोड़े लोअर किए गए हैं FY23 के लिए.
और आगे जो मैक्रो हैंडलिंग और जो डील साइकिल शॉर्ट हो रही है उसके चलते रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन को भी हमने थोड़ा टेपर किया 11.1% से। सो हमने इसे डाउनग्रेड किया है प्राइस टारगेट 396 के साथ। और हाँ, और हमारी इसके ऊपर फिलहाल अभी बाय रेटिंग है और उसके चलते जो शार्प प्राइस फॉल में मिला है। सेकेंडली आइनॉक्स लेजर के भी रिजल्ट्स आ गए, रिजल्ट्स देखे गए तो अच्छे थे। इसकी हमारी करंट होल्डिंग है बाय होल्ड और टारगेट प्राइस 665 है। रेवेन्यू देखा जाए तो 582 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि 317 करोड़ से जंप मारा 83%। एबिटा देखा जाए तो 123 करोड़ था जो कि उन्होंने लॉस पोस्ट किया था 106 करोड़ का। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 73 करोड़ का था। ईपीएस देखा जाए तो 6 रुपीज का है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के भी रिजल्ट देखे गए, रेवेन्यू देखा जाए तो 3125 करोड़ का है जो कि 8% जंप है ईयर ऑन ईयर पे। एबिटा देखा जाए तो 520 करोड़ का है जो कि हमें फॉल देखा है 13% ईयर ऑन ईयर पे। मार्जिन भी 406 बेसिस पॉइंट से गिरा है 16.7% पे। और एडजस्टेड पैट देखा जाए तो 347 करोड़ से ये भी डाउन है 17% ईयर ऑन ईयर पे। ओवरऑल इसकी हमारी जो है रेटिंग बाय है 1017 प्राइस टारगेट के साथ। वोडाफोन आइडिया के भी नतीजे देखे गए, रेवेन्यू देखा जाए तो 1.6% ग्रो हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो कि 10,400 करोड़ है। पर ये टेलीकॉम कंपनी ने देखा जाए तो लॉस पोस्ट किया है 7,296 करोड़ जो कि क्वार्टर एंडेड जून है, अगेंस्ट जो कि 6,563 करोड़ का है प्रीवियस ईयर में। और एबिटा भी देखा जाए तो 7% से डाउन ही है 4,328 करोड़ पे। और मार्जिन देखे जाए वो भी डिक्लाइन हुआ 380 बेसिस पॉइंट से जो कि 41.6% है। इंटरग्लोब एविएशन के भी नतीजे देखे, रेवेन्यू अच्छे से ग्रो हुआ 327.5% जो कि 12,855 करोड़ का है। कंपनी ने नेट लॉस है वो उसके नेट लॉस क्यों हो गया है 1064 करोड़ का। इन्होंने जो लॉस है वो पहले दिखाया था 3174, तो ये लॉस में हमें और कंपनी देखी गई है। एबिटार देखा जाए तो 716 करोड़ का एबिटार है। और मार्जिन में भी हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा गया जो कि 5.6% का है। और एबिटा वजह से देखा जाए नेगेटिव एबिटा आ रही है 1360 करोड़ का जबकि 45% डाउन। जीएमसी प्रोजेक्ट्स के भी नतीजे देखे गए, अगर हम कंसोलिडेट देखें प्रॉफिट तो 331 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया उन्होंने जून में अगेंस्ट जो कि 10 करोड़ का लॉस था सेम ईयर में। रेवेन्यू देखा जाए तो सेम पीरियड में इंक्रीज 44% से हुआ है जो कि 1671 करोड़ का है जो कि एक लो बेस पे है। स्टार्टिंग क्रेडिट केयर के भी नतीजे देखे गए, प्रॉफिट उन्होंने पोस्ट किया 60 करोड़ का जो कि क्वार्टर एंडेड जून में था अगेंस्ट 71 करोड़ का लॉस। नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखा जाए तो वो भी ग्रो हुई है 3 फोल्ड जो कि 512 करोड़ की है अगेंस्ट 157 करोड़ की। और जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो हार्डली डिक्लाइन हुआ 0.85% से जो कि 6389 करोड़ है। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट के भी रिजल्ट देखेंगे, रेवेन्यू ग्रो हुआ 10.5% से जो कि 706 करोड़ का है। और कंपनी ने रिपोर्ट किया है 12.8% का क्वार्टर क्वार्टर डिक्लाइन। और प्रॉफिट देखा जाए तो 55 करोड़ के आसपास का है। और कर्नाटक गवर्नमेंट भी एक एग्रीमेंट में टाई अप कर रहा है यूबी कोलैंड के साथ। और ये यूबी कोलैंड है कि ऑनलाइन जो है डिजिटल ऑनबोर्ड करेगी वेरियस एनबीएफसीज को लेंड करने के लिए। और इससे इनकी जो कस्टमर बेस है वो और भी वो बढ़ा सकते हैं और आउटरीच कर सकते हैं। रेडिंगटन इंडिया के भी रिजल्ट देखे गए तो अगर हम देखे जाए तो 36% का हमें जंप देखा गया ईयर ऑन ईयर सेल्स में जो कि 326 करोड़ का है। प्रॉफिट में सॉरी जंप देखा गया जो कि 326 करोड़ का है। रेवेन्यू 25% से ग्रो हुआ 16,803 करोड़ का। और हाँ दैट्स इट। और इसके बाद अडानी विल्मर के भी रिजल्ट देखे गए, रेवेन्यू ग्रो हुआ 30% से जो कि 14,730 करोड़ का है। और कंपनी ने रिकॉर्ड किया 10.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में, प्रॉफिट में भी जो कि 193 करोड़ का है। और एबिटा देखा जाए तो इंक्रीज हुआ 14% से जो कि 496 करोड़ का है। अभी हम देख रहे हैं कि क्रूड जो है वो $100 के नीचे आ गया और वो थोड़ा सस्टेन भी कर पा रहा है। ये 30 इयर्स के अगर हम देखे जाए तो ये बहुत पहली बार ऐसा देखा गया जो $100 के ऊपर बहुत टाइम तक क्रूड चलता रहा। और अब क्रूड अभी $100 के नीचे आ रहा है तो इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि हमें जो जीएसटी कलेक्शन है उससे और ओवरऑल ग्रोथ में भी हमें सुधार आते हुए दिख रही है। जो मायरसा के जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी, उन्होंने कहा कि शिपिंग रेट्स पे गिर सकते हैं क्योंकि डिमांड के लैक्स चलते हैं। और सबसे ज्यादा हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्रूड गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की वजह से ही हो रहा है। अगर इसमें कम आती है गई देखी गई तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा इंडिया के लिए। आरबीआई की पॉलिसी शेड्यूल्ड है फ्राइडे के लिए। हमें लगता है 35 बेसिस पॉइंट्स के आसपास तक का जो रेट हाइक है वो इंटैक्ट रहेगा। इससे ऊपर रहेगा तो थोड़े नेगेटिविटी रह सकती है। नोवेलिस के भी रिजल्ट देखेंगे, रेवेन्यू 32% से ग्रो हुआ जो कि $5.1 बिलियन के आसपास का है। एबिटा $583 पर टन के आसपास का पोस्ट किया गया, तो हिंडाल को हमें स्टॉक को वॉच रखना चाहिए।
चंबल फर्टिलाइजर्स के भी नंबर्स देखे गए। रेवेन्यू देखा जाए तो 7,291 करोड़ का है, और पैट देखा जाए तो 10% फॉल हुआ है, 10.34% से फॉल हुआ है। इनका डेट देखा जाए तो 3,729 करोड़ का है। इनकी पैट में मेन रीजन है जो यूरिया की स्कैरसिटी और सप्लाई के चलते इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट आ रहा है। और जो रेवेन्यू देखा जाए तो बहुत ही अच्छा खासा 2x के आसपास ग्रोथ देखा गया। देवयानी की भी रिजल्ट देखेगा, रेवेन्यू 100% का ग्रोथ दिखेगा जो कि 704 करोड़ का है। पैट 74.8 करोड़ के आसपास का है। एबिटा 23% का है। इन्होंने 70 न्यू स्टोर्स ऐड किए और 1008 टोटल इनके स्टोर्स हैं। ये कंपनी KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी और वैंगो जो कि एक साउथ इंडियन बेस्ड फ्रेंचाइजी है उसको होल्ड करती है। KFC में 425 स्टोर्स और पिज्जा हट के 165 आउटलेट्स है। हम कल देख रहे हैं कि जैसे AMC स्टॉक्स में थोड़ा करंट दिख रहे हैं, नाम इंडिया, UTI AMC ये सब चलने लगे हैं। इसके चलते HDFC AMC भी चलने लग जाए तो UTI जो AMC जो है वो एक अच्छे से कर सकती है और हमें इसे फोकस में रखना चाहिए। आदित्य बिरला कैपिटल के भी रिजल्ट देखेंगे। रेवेन्यू ग्रो हुआ 5859 करोड़ से, और पैट देखा जाए तो 42% ग्रो हुआ 429 करोड़ से। इनके पास टोटल 3.9 करोड़ कस्टमर्स है, और AUM देखा जाए तो 22% ग्रो हुआ 69,877 करोड़ की। आदित्य बिरला कैपिटल की होल्डिंग कंपनी है आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस और जो उनकी AMC बिजनेस के लिए। और टाटा कॉफी के भी रिजल्ट देखेंगे। रेवेन्यू ग्रो हुआ है 24% से जो कि 666 करोड़ का है, और पैट देखा जाए तो 42% ग्रो हुआ जो कि 65 करोड़ का है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के भी रिजल्ट देखेंगे। रेवेन्यू ग्रो हुआ 22% से जो कि 1361 करोड़ है, और पैट देखा जाए तो उसमें हमें फॉल मिला है 33% से जो कि 58 करोड़ के आसपास का है। बेसिकली ये फॉल का रीजन है क्योंकि केन की प्राइसेस हाइक हो रही है इसके चलते, और इथेनॉल ब्लेंडिंग भी बढ़ा रहे हैं, सो इसके चलते इनको थोड़ा बूस्ट मिल सकता है। So that's it from mine. Thank you everyone for attending the morning call. You may now disconnect.